And Guruji always be with you. He always has been. He always will be. We are all really blessed to have been connected with Guruji. गुरुजी का मुझे हुक्म था कि मेरे को अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है और तकरीबन 265वां सत्संग है आज मेरा और तकरीबन 150 तो गुरुजी अपने होते ही मेरे से करवा गए थे। जब भी मैं गुरुजी के मंदिर जाता था तो गुरुजी हर बार मुझे अपना सत्संग सुनाने के लिए कहते थे, हर बार। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज मुझे फिर सत्संग सुनाने का मौका दिया जा रहा है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी का बहुत बुरा अटैक हुआ था मुझे। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 पे चला गया था और आप सब जानते हैं कि बिलिरुबिन काउंट बियॉन्ड 12 इज कंसिडर्ड डेंजरस। उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई क्योर नहीं थी। प्रिवेंटिव मेडिसिन आ चुकी थी तब भी और आज भी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, मगर सिंस माय केस वाज वेरी सीरियस, R&R who were treating me, R&R इंडियन मिलिट्री का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट मतलब डेंजरसली इल। डेंजरसली इल का मतलब दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट टू लाइफ, और अगर मतलब किसी टाइम भी आप जा सकते हो, इट्स लाइक अ वन वे टिकट। सो अंडर दीज कंडीशंस मेरे को डॉक्टर्स ने यही कहा कि आप जो भी ऑल्टरनेट थेरेपी या फेथ हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप जरूर कराइए, बिकॉज वी हैव नो क्योर अदर देन टू टेल यू कि आप फुल बेड रेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी खाने वगैरह के लिए। तो मैंने उस समय कोई ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं छोड़ी। मैंने 1000 दाना खाया जो केरला का एक जड़ी बूटी होती है, मैंने मैग्नेट थेरेपी की, मैंने कलर थेरेपी की, मैंने आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैंने नारायणा में किसी गुरु होते थे वहां पे वो माला पहनवा देते थे और वो भी पहनी, मगर नथिंग वाज हैपनिंग। 1 महीना हो चुका था और मेरी कंडीशन वैसी की वैसी थी। एंड अराउंड द सेम टाइम गुरुजी फर्स्ट टाइम केम टू दिल्ली एंड उन्होंने ग्रेटर कैलाश में एक बेसमेंट के अंदर अपना मंदिर शुरू किया और एक सीनियर ऑफिसर की वाइफ, एयर मार्शल की वाइफ थी, वो खुद डॉक्टर थी और वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी जलंधर से। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाहते हो, अगर आप, तो मैं आपको एक गुरुजी हैं, वो अभी आए हैं दिल्ली में कुछ ही दिन पहले, और मैं आपको उनके यहाँ ले जाती हूँ और इफ यू बिलीव देन ही विल ब्लेस यू। तो मैंने इंस्टेंटली उनको कहा कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, और वो शाम को अपनी स्टाफ कार लेके आई और मैं उनके साथ गया। अराउंड 20 मिनट्स की ड्राइव थी। डॉक्टर्स ने मुझे कह रखा था कि किसी कीमत पे मैं अपने बेड से नहीं हिलूंगा, कमरा तो क्या छोड़ना है, और मगर मैं ये 20 किलोमीटर्स क्लियर माइंड के साथ गया। और जब वहां पहुंचे तो बेसमेंट के अंदर 5-7 सीढ़ियां थी जिसके जहां मैं उतरा, और ज्यों मैं उतरा तो मैंने सामने देखा कि गुरुजी बैठे हुए अपने सिंहासन पे और थोड़ी संगत भी है, और मैं गुरुजी की तरफ देखता रहा और आई वॉक स्ट्रेट टू गुरुजी एज वॉज इंस्ट्रक्टेड। मैंने गुरुजी के पांव छुए और ज्यों मैंने गुरुजी के पांव छुए तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रख के कहा, चोपड़ा चल तेनों मैं ठीक कर देता। इन वन इंस्टेंट, within 45 seconds of my presence in that hall, Guruji had already blessed me and said, and he repeated that again and again, Chopra मैं तेनों ठीक कर देता, Chopra मैं तेनों ठीक कर देता। And he asked me to sit down. I looked for a place where I could rest my back because rest was the most important cure for me. So मैं जाके एक दीवार के साथ बैठ गया और विदिन 5 मिनट्स गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। जो अमृत, जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको बताऊं कि
एक सेवादार खूब सारे टम्बलर, स्टील टम्बलर्स लेके आते थे पानी के, और गुरुजी के हाथ में चंदन की माला थी, और उस माला के साथ गुरुजी माला को पानी के अंदर चलाते थे, कुछ मंत्र बोलते थे, और उसके बाद वो अमृत बन जाता था, और वो अमृत वो अपनी संगत को देते थे। तो सबसे पहला ग्लास उन्होंने अमृत का बना के मुझे दिया, मैंने एकदम उसको पी लिया, फिर औरों को देते रहे, बीच बीच में ज्यों ज्यों मेरा ग्लास खत्म होता था तो फिर एक ग्लास, ऐसे करके उन्होंने मुझे 8 ग्लास अमृत के पिलाए। ना देखिए 250 ml उसमें लिक्विड होता है, एंड दैट्स क्वाइट अ बिट, इतना आसान नहीं 8 ग्लास पीना, मगर आई मस्ट टेल यू, I don't know where, obviously the strength came from Guruji. I managed to have all eight of them, and I was quite comfortable having them. उसके थोड़ी देर बाद, उस समय संगत बहुत कम होती थी, लंगर भी थोड़े ही लोग खाते थे। ये मैं फर्स्ट वीक ऑफ गुरुजी बीइंग इन दिल्ली की बता रहा हूँ। तो लंगर शुरू हुआ तब हर जने को एक एक सेपरेट प्लेट मिलती थी, 2-2 रोटियां वैसे ही थी जैसे आजकल भी मिलती हैं। और मैंने खाना जब शुरू करने लगा तो जो डॉक्टर थी मेरे साथ बैठी हुई, उन्होंने कहा कि देखो, एज अ डॉक्टर मेरे को आपको बताना है कि ये खाना फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ठीक नहीं है, मगर डिसीजन इज एंटायरली योर्स बिकॉज इट इज लंगर प्रसाद, यू हैव टू डिसाइड। सो आई सेड नो, आई एम वेरी क्लियर, आई विल ईट। सो आई एट, एंड जब मैं अपनी दूसरी चपाती खत्म करने वाला था तो तब गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में चपाती थी, जो मैंने चपाती खत्म की उन्होंने हाथ से मुझे एक और चपाती दे दी, मैंने वो भी खा ली। और उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो हुण जाओ, ते फौजी आदमी है, फिर आइयो, परसों आइयो, टेस्ट करा के आना, रिजल्ट लेके आना। तो वी लेफ्ट, and next morning I got my blood, I gave my blood for the test, and the report came the day after, the day that Guruji had asked us to come. And in the morning when the report came, the bilirubin count had drastically come down. Now I knew that here is where I have to be, and this is Guruji has got some solid power, in overnight situation is changing for me. So I went there, and this time my wife also went with me, and when we went to Guruji के हम मंदिर में पहुंचे तो first thing he called her by her name, say सुमन आंटी आ गई हैं, ते चल तेरी मैं फाइल खोल देना। And Guruji was standing in that pathway from where we were to walk it, and standing there he just narrated 10-12 things about her personal life, which normally outsider would know. So everything he said was absolutely true, and I heard this file opening again and again during my association with Guruji, and every time whosoever's file he opened, वो Guruji बिल्कुल सारा कुछ बता देते थे। Obviously he had power to look through you and beyond you. So after this satsang, I will stop this part because I got very, very quickly cured in a few days. But I must mention that one day Guruji said to me, every time I would go, Guruji would converse with me. Normally he used to converse very little, but there were some people he used to converse. And I was blessed that he used to converse with me every time. Maybe because I was a Fauji or something he had, he perhaps felt that I needed to be conversed with because he wanted to transfer his energy to me. और तो गुरुजी ने क्या हुण कल फिर तेरा टेस्ट ड्यू है, मैं क्या हाँ गुरुजी, कहते हुण 3 होना है, मैं क्या नहीं गुरुजी, जितनी तेजी नाल नीचे उतरे है वो हुण तो बिलो 1 हो जाएगा, कहते कोई गल नहीं, टेस्ट करा ली। So when I got the test done, the bilirubin count was exactly 3. So how he had predicted, and the exact figure, only Guruji knows. So I will leave this satsang here because many things happened and I got cured totally. But parallelly, when this was happening with me, there was another satsang going on of a major general. Now, a major general who had gone for his annual medical to the hospital, they said that you have got 100% blockage. Oh, 100% blockage was a serious thing in those days. तो उनको बोला गया कि आप एक बार टेस्ट कराइए जाके। एस्कॉट्स नया खुला था, डॉक्टर त्रेहन बाहर से आए थे, उन्होंने एस्कॉट्स खोला और उधर उनको बोला गया, वो जनरल साहब वहां गए
और उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि आपका 100% ब्लॉकेज है। देन ही हैड टू स्टार्ट दी प्रोसेस फॉर, उस जमाने में बाईपास होता था, आजकल तो बड़े और सिंप्लीफाइड सिस्टम्स हो गए हैं। तो उन्होंने बाईपास के लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा देती थी, वो पैसा उन्होंने कलेक्ट करके डिपॉजिट करा दिया और 1 हफ्ते बाद की स्कॉट्स ने उनको डेट दी। सो द फैमिली वाज नाउ वेरी वरिड कि देखिए हार्ट इज अ सीरियस इशू एंड बाईपास इज अ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने सारे रिश्तेदार दूर दूर से आके इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो नोएडा में रहते थे, तो एक दिन किसी ने बोला, दूसरा या तीसरा दिन था, कि यहाँ गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो हम आपको वहां ले चलते हैं। गुरुजी क्योर कर देते हैं। तो इन्होंने, जनरल साहब ने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप, ये हम गुरुओं वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, व्हाट इज द गारंटी, इतने बड़े बड़े 2 अस्पतालों ने कह दिया है। मगर फिर भी फैमिली ने कहा कि अरे आपका क्या जा रहा है, वहां कोई फीस थोड़ी दे रही, कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी ले रहे, तो आप चलिए। तो ये फिर अगले दिन आए गुरुजी के यहाँ पे। तो गुरुजी ने इनको ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने इनको अपने चेंबर में ले गए, वो पान के पत्ते उनकी छाती पे लगाए, उसके ऊपर मंत्र बोला, 20 मिनट वहां लिटा के रखा। और मैं सब वही सत्संग सुनाऊंगा मैं आज, जो जो मेरे सामने हुए, आई वॉज एन आई विटनेस, या मेरे खुद के साथ हुए, ताकि देर इज नो हियर से और थर्ड पार्टी सत्संग विच आई विल टेल यू. And you won't believe it, Guruji told him after he finished being in the chamber कि आपका हार्ट बिल्कुल अब क्लियर है और फौज के सीनियर अफसर हो, आप जाइए टेस्ट कराइए, तसल्ली करिए, अगर आपका टेस्ट में ब्लॉकेज अभी भी है तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, अगर नहीं है तो फिर आपका कल्याण हो गया. So General Sahib was of course confused, but he went all the same to escorts next day. And when he went to escorts and met the doctor, doctor said, "You are crazy. What? There's no science, there's no logic in what you are saying." So he said, "नहीं, आप हमारा टेस्ट कर दो, करेंगे 10,000 लगेंगे." 10,000 used to be a big amount those days, and the family decided, नहीं आप करो, 10,000 देंगे हम. And you won't believe it. There was test के अंदर जीरो ब्लॉकेज निकला. उन्होंने वो 10,000 भी नहीं लिए उस टेस्ट के, बिकॉज दे वर रियली, एंड दे आस्क्ड कि ये क्या, कहाँ से, कैसे हुआ ये सब. तो उन्होंने बताया कि ऐसे से गुरुजी आएंगे. एंड दैट इज व्हेन डॉक्टर त्रेहन एंड हिज फुल टीम ऑफ डॉक्टर्स वो सब आए गुरुजी के यहाँ. उसके बाद गुरुजी के यहाँ भगत बन गए त्रेहन. डॉक्टर त्रेहन को मैं कई बार वहां मिला. तो मेरा कहने का मतलब है, और उसके बाद जो जनरल साहब थे उन्होंने अपना रिटर्न कर दिया पैसा जो गवर्नमेंट से एडवांस वगैरह लिया था फॉर ऑपरेशन के लिए. हिज कैरियर केम बैक ऑनलाइन. सो two of these satsang which I have just narrated to you are related to medical cure. Now I will narrate you some more satsangs which happened with me, and they are not related to medical. See, एक और हमारे भगत थे, वो भी पायलट थे मेरे जैसे. वो यहाँ पे VIP स्क्वाड्रन के CEO थे इन दिल्ली. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है आदमपुर पठानकोट साइड की, तो अगर आप ठीक समझो तो हम आदमपुर जाते हैं और थोड़ी देर वहां ब्रेक लेंगे, जाके गुरुजी के यहाँ दर्शन करके आ जाएंगे. तो गुरुजी जलंधर में थे. तो हम सवेरे सवेरे की उन्होंने ट्रेनिंग फ्लाइट प्लान की. सवेरे 8 बजे हम जहाज के अंदर जाके बैठ गए. एकदम विजिबिलिटी ड्रॉप कर गई. सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर का महीना था. और उसके बाद वो विजिबिलिटी क्लियर ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जब विजिबिलिटी गिर जाती है कई बार विंटर डेज में क्लियर नहीं होती. तो फाइनली वो 12-1 बजे के करीब क्लियर हुई. फिर हम टेक ऑफ किए, घंटे की फ्लाइट थी, वहां लैंड किए. जब तक हम गुरुजी के आश्रम पहुंचे जलंधर में तो टाइम हो चुका था तकरीबन 4 बजे का, शाम की 4 बजे का टाइम हो चुका था. तो वहां जाने से एक दिन पहले हमने फोन किया था पता करने के लिए उनके सेवादारों से कि गुरुजी वाकई जलंधर में हैं, तभी हम ये प्लानिंग करें. तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी हैं, और उन्होंने गुरुजी को भी बता दिया था कि वो जो पायलट हैं दोनों वो आने वाले हैं कल. तो गुरुजी सुबह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 बजे के करीब आएंगे. मगर जब हम आश्रम में पहुंचे तो गुरुजी अपना चेंबर में रेस्ट कर रहे थे. 3-4 लोग बैठे हुए थे सिर्फ हॉल के अंदर उस टाइम.
तो जब हम वहां पहुंचे, हम भी जाके बैठ गए उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि आप लोग दिल्ली से आए हो, आप लोग पायलट हो? हमने कहा सुबह से गुरुजी आपकी बातें कर रहे हैं। तो फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम लेट हो गए, मगर हम बैठे रहे। 15-20 मिनट बाद गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले, सीधा हमारे पास आए, बहुत लेट कर देता है। हाँ, हमने कहा हाँ गुरुजी ऐसे, कहते नहीं नहीं दसन की लोड़ नहीं, मैंने सब पता है की होया है। So we sat down, we were sitting next to Guruji, listening to the bhajans, and because the Adampur base commander had told us that the last takeoff from there is at 6 o'clock, because of there was no night facilities available that day, because there was no night flying planned. So we wanted to leave Guruji's Mandir by 5 o'clock for us to be there positively by in time for the 6 o'clock takeoff. So around 4:45, I started looking at my wristwatch, and Guruji saw that. Guruji said, "Chopra, pehla ta late aande hun kadiyan na dekho." मैं कहने नहीं गुरुजी, no problem. I just kept, and then we carried on sitting, and then around 8 o'clock, before even the langar had come, Guruji's called some sevadar, and then he brought 4 boxes of laddus and 2 saris, and he gave 2 boxes of laddus to me and 1 sari, and similarly to the other officer, and say, "Hun jao, auntiyan layi hai, jao, hun tusi jao." Asi kya Guruji, hun ta asi take off kar hi nahi sakde, hun ta asi ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਚਿੱਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। So we were a little confused. Of course, Guruji's orders were orders, so we left and we went to Adampur. And when we reached Adampur around 9 o'clock, we find that the base commander is waiting. He has said that some special clearance has come for night flying to be permitted, and you all can take off. The aircraft is being prepared. The ground crew have already done the needful. So we went, we took off, and late around 11ish we reached our homes. See, so I have told you a satsang which is slightly different than so how this whole thing got engineered, why he insisted we leave at 8 o'clock and we didn't let us leave at 5, only Guruji knows. Now, there were a large number of VIPs or so-called VVIPs, though in Guruji's place there is nobody like VIP or VVIP, nor do I believe that there is anybody who's a VVIP, but these people were used to come. And I have met Prime Minister VP Singh there, I have met TN Session, I have met Mayawati, Bhajan Lal, I have met large number of people. And whenever वो आते थे तो गुरुजी मेरे को बोल देते थे कि चोपड़ा इना नाल गप्पा मार, इन्होंने कहानियां सुना, or something to that effect. And I must tell you that each one of them was very, very different. When VP Singh came, he quietly sat and listened to the bhajans like anybody, any one of us would do. But when other like Mayawati or Bhajan Lal came, they had their own little tantrums. In fact, when Mayawati came, Guruji told me, "Ki inanu mere chamber chale jao." So I asked her to come with me, and then when she was coming, there was some escort of hers was also there in civil clothes. He also came, and I told that escort, I said, "I'm sorry, only I am supposed to take her." So we both went inside, and she was not comfortable. I went and sat down because the room was just 10 feet by 10 feet. There was a single bed. I couldn't have sat on the bed because that was Guruji's bed. So मैं जमीन पे चटाई बिछी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गया। तो वो बोलने लगी कि मैं तो यहाँ बैठ नहीं सकती। Anyway, we organized एक छोटा मूड़ा ऑर्गेनाइज किया गया जिसपे वो बैठ गई। And then she says, "But why has he asked you to come with her?" I said, "Guruji's orders to me are to narrate stories to you, and I am obeying that order. Your job is to listen. If you want to listen, you please listen. If you do not wish to listen, the problem is yours." So I narrated a few stories, and thereafter, we went back. I told some such stories means satsangs. And so they were different. Like TN Session came, he was standing in one corner. Somebody had told him to bring a tambe ka copper vessel, which he was holding in his hand. So Guruji said, "Oh, khade hai, unhone kol jaake gallan karo." So I also stood next to him. We both were looking in front, but I was conversing with him, and I told him, I said, "Guruji has asked me to speak to you." He says, who are you? So I told him, I said, "I'm one of the Sangats of Guruji." And so I narrated a satsang to him, and he quietly listened.
But he didn't react, he didn't speak. So different people used to come and different, way. There were similarly many industrialists who used to come, and of course they all were connected. So therefore there was no conversation for me to have any of them. Guruji was very considerate. उनको पता था कि मेरी पोस्टिंग्स जगह जगह फॉरेन कंट्रीज में भी रही, मेरी पोस्टिंग कभी असम में, कभी साउथ इंडिया में थी. तो जब भी मैं आता था दिल्ली तो मैं गुरुजी के यहाँ जाता था. तो गुरुजी पहले दिन ही मेरे से पूछ लेते थे कितने दिन के लिए आया है. तो मैं बताता था, कहते ठीक है हफ्ते के लिए आया है, सिर्फ 2 दिन आना है, बाकी दिन तो अपनी जाके दोस्तानों में विस्की पी, अपने और काम कर. He was very considerate that everybody has to live their own lives in their own way also. So he was very sort of open about it, and he told the Fauji, okay, once in a, you must go and have a drink with your friends, etc. So one day I was, another thing I will tell you is that Guruji always was considerate that some lady has to go back home alone at night, because there were many ladies who would come, some would be coming alone, and they would have to drive back. And especially in Avalon resorts on MG Road, when the ashram was there, of course it's all night traffic, but that time single lane sadak hoti thi. And people were a little scared, especially those who had to go to Gurgaon, because there was not enough light on that road. So one day, and Guruji would make sure that these ladies are normally escorted with some other car is going ahead or behind the lady who has to go. So one day there was one lady, Deepika, she was seeking permission at around 10:30 from Guruji to go. And Guruji never would stop a lady like that. But that day Guruji said, nahi, तुसी हजे नहीं जाना, बैठो इत्थे. And told her, oh, Chopra बैठा, उधर नाल जाके बैठे गप्पा मार. Now I was sitting there, this lady came and sat next to me. I was listening to this conversation because I could hear what when Guruji placed that order. तो वो दीपिका मेरे पास आके बैठनी और उन्होंने initiative लिया. She said to me, she says, आप कौन हैं? मैं क्या, I'm so and so. कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ. वो बोलने लगी कि अरे कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा कपूरथला तो बहुत छोटा सा शहर है, आप नाम बताओगे तो मैं बता दूंगा अगर मैं उनको जानता हूँ. तो उन्होंने एक नाम बताया, वो नाम मेरी मदर का था. See how Guruji made me connect with a lady who was first cousin of my mother. Now I take you back, when I was in class 6, I had first time gone to Patna and then to Calcutta. And in Calcutta, we lived in the house, a bungalow of a very senior official who was a close relative of my mother's side. And in that house, since I was a little kid that time, the others used to converse and I used to quietly listen. And in that conversation, they used to talk about one girl called Gogo, who was studying in some hostel in some, good boarding school. That Gogo, that name was there in my mind since that childhood, because I heard some very, very good things about that lady called Gogo. And that Gogo was the Deepika who was sitting next to me that. Just see how Guruji made sure she doesn't go that day. She asks her to sit next to me and they connect. And then we reunited as a family, and thereafter till today we are so close to each other. So I want to tell you, so there is another, a different facet of Guruji I have just mentioned to you. One day my wife in the afternoon sleep, she got a dream that she saw Guruji wearing a t-shirt and a trouser and sneakers. And when she just got up around 4 o'clock in the afternoon and told me, ऐसे मैंने Guruji देखे ऐसे. मैंने कहा चलो आज Guruji के मंदिर चलते हैं. Mandir means the Avalon Resort that time. So she and I, we drove to Guruji's Mandir. We went a little early. And Mandir was closed. We reached around 4:45. There was one more person waiting outside, some lady. And then all of a sudden the door opened. And what we see, Guruji, he's wearing a half shirt.
He is wearing trousers and he is wearing sneakers. And just three of us, that lady and my wife and I, are looking at him, and we can't believe it. That's what she saw in her dream. And हम अंदर गए, गुरुजी एक वहाँ अंदर साइड बोर्ड था बड़ा सारा, उसके ऊपर जंप करके गुरुजी बैठ गए चौंकड़ी मार के, और then he held her and me in his arms, one side each. And then he did some conversation for 3-4 minutes. And then, of course, we went and sat down like any Sangat would be. So, again, another facet. In my various conversations, I used to ask Guruji, how is it that the very first day I came and within few seconds of my arrival in the Mandir, you have blessed me, and there are many people जो बहुत बार आते हैं, उनको लगता है कि उनको अभी blessings मिली नहीं. No, he told me two things which I think is very important for सबको संगत को समझने के लिए. The first thing was कि he said, Guru is like a radar. He said Guru is pumping energy outwards, and the Sangat is like having a receiver antenna. Now, Guru is pumping energy in all directions, but many of the people's antennas are not correctly pointing towards the Guru, with the result the energy that the Guru is trying to pump in is not reaching some of the people, or not reaching that much quantity जितना उनको energy की जरूरत है. He says, the day you came, I could see you as you walk down those steps, that here is a person who is clearly focused and his antenna is fully pointing towards me to take all my energy. So he said, this is the whole science about Gurus, is that Gurus have got special powers. They have power to transmit the energy, and it is the individuals who come here. And he said that ये जो energy है वो transmit बहुत तरीके से होती है. एक तो गुरु की खुद की रेडियंस है, आपको फिर पानी प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, भाजन, हर तरीके से आपके पास वो एनर्जी आ रही है. But you should have the faith connectivity, and your antenna must be pointing for you to be able to, fully take that energy. A few times he asked me to come and press his feet. But there were many others who he used to ask much more often to press his feet or legs or calves or, shoulders or hands or arms. Different people in different. And there were a lot of people who were very confused कि ये गुरुजी ऐसे क्यों करवाते हैं, क्यों दबाते हैं. Some people used to उसकी कई connotation बना देते थे. In fact, my own children, my wife used to feel a little envious about me, saying आपसे गुरुजी ने 3-4 बार पाँव दबा लिए, हमसे क्यों नहीं आज तक दबाए, because they used to feel why this special treatment, why only you. So one day I asked गुरुजी, मैंने कहा मेरे बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी selectively करवाते हैं पाँव दबाने का. तो he said कि मैं उन लोगों से दबाता हूँ जिनको मेरे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है. मेरे को हर इंसान की प्रॉब्लम्स का पता है, और मैं उनको से ही ये करवा रहा हूँ, क्योंकि उनको जैसे अरुण शोरी थे, उनसे बहुत ज्यादा टांग पाँव दबाते थे. So this is another aspect of Guruji's. Another aspect I must tell you is that Guruji was very knowledgeable. He was not just, he might not have done some big degree or something like that, but his knowledge was very complete. One day, one lady came. She was from some royal family in Rajasthan. She came and the moment she came, she had she was accompanied by 3 daughters. So Guruji ne ज्यों आए उनको बोला चलो मेरे चेंबर में चले जाओ. So they went to the chamber, and after that he told me चुपला तुम ही जाओ, उन्होंने कहानियां सुना. So I went also inside and I was starting my conversation, and then Guruji himself also walked in. So I could hardly finish my satsang. I just had started. And then Guruji started conversing with them. First I thought I would walk away. Then Guruji said, no, you also stay here. And then Guruji asked, he says, exam ho gaya? She asked the second girl. She says, हाँ Guruji ho gaya. कि पास हो जाएंगी? कहती पता नहीं Guruji, I'm not sure. तो Guruji ने कहा second year eco honors नहीं, वो कहती है final.
तो कहते हैं ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, मैं तेरे को ना सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तूने वो सेकेंड ईयर वाले आंसर कर दिए तो फिर चांसेस हैं कि तू पास हो जाएगी। सो यू वॉन्ट बिलीव इट, गुरुजी ने उनको 3 क्वेश्चन पूछे about second year eco honors syllabus. Now, eco honors is not, it's not a common subject, and for anybody to know these questions for that particular year eco honor, syllabus is not sort of easy. But Guruji asked 3 questions. All 3 questions were from second year syllabus, which the girl confirmed later on, and all 3 she could not answer. So the point I'm making is that Guruji had, a great amount of knowledge beyond just being a healer, the way we all sort of know him. One day a lady came, elderly lady, she was I think around 84, 85, some age like that. She lived in the neighborhood in Greater Kailash. That time Guruji was in Greater Kailash, and then she walked in and immediately she touched Guruji's feet, and she just sat down next to Guruji. And she said, Guruji, bas meriya na hun lattan gayiyan, meriya hun na, my knees are gone now, you do something now, I'm really fed up. So Guruji said, kinni umar ho gayi? 85. She says, तो गुरुजी कहते हुण नहीं, अगर नीज खराब होनी है तो फिर कद होनी है, तो इस करके घबराने की कोई लोड़ नहीं है। फिर उन्होंने गुरुजी आस्क्ड हर 3 क्वेश्चंस। शी सेज गुरुबाणी पढ़ती हो? कहंदी नहीं। की फिर कहंदी कोई होर गीता का पाठ करती हो? कहंदी नहीं। कहंदी ओम भूर्भुवः स्वः आंदा? कहंदी नहीं। सो गुरुजी कहते you are coming for a cure to me, please connect with God in some form in your own house, do some kind of a prayer, and then only you will get connected, and then your problems will get solved. So, in little conversations, Guruji was conveying some of the things for whole Sangat, because others used to listen to this conversation to say, get connected. This is the lesson being given to the others. Guruji used to often have late night sessions. I was blessed to have attended many of them. Guruji was selective. When you sought permission to leave, Guruji will tell some people, no, you don't leave, you stay on. That means he was going to stay on for a little late. And then there was late night sessions. Some of them would last 1, 2 o'clock, even early morning, 4, 5 o'clock. And there will be a time where there will be some songs, there will be some additional food which will be ordered, some samosas will come, some, even at night, paranthas will be served, or a cup of coffee will come, and a little more conversation, Guruji would do with the people. There will be somebody who will be asked to sing, somebody will just get up and dance, all kinds of things. So this was another, aspect of Guruji. Guruji was very fond of doctors and Faujis. And one day I asked Guruji, I said, Guruji, why are you so fond of Faujis and doctors? So then he explained to me. He says, for any cure by a guru, the first thing is that focus of the mind, which I earlier mentioned. Second is the clean heart. He says, you people in Fauj are taken by the military at such young ages of 15 to 20, and then you're hammered and disciplined, and you're very, very clear and focused in your mind. And so it's so much easier for a guru to be able to cure a Fauji, and also because Faujis are doing so much of sacrifice. Therefore, I have a special feeling for Faujis. And I said, then what about doctors? He says, most doctors believe science is more important than faith, and therefore वो जो doctors हैं वो बड़ी rarely जुड़ते हैं गुरुओं के साथ. But जो doctor गुरुओं के साथ जुड़ जाता है, that means he has a different clarity of mind, and he feels that there is something beyond the normal system of medicine for cure. And that is the reason why doctors and Faujis I have a special relationship with. So I thought I will just mention. And in this context, he said, and he says, देखो irony देखो, he said, जब लोग मेरे पास आते हैं ना, वो expect करते हैं कि पाँव छुए और गुरुजी ने bless कर दिया और मैं ठीक हो गया और मैं वापस चल जाऊं. But he says, I must explain to you how individuals come to me. He said, when you have a headache, you normally pull out a Disprin or aspirin from your medicine box and have it. And then after 2-3 days, if the headache doesn't cure, then you
call up your house physician or doctor to say, okay, I've got a headache, which is just not going. Then he'll give you some other medicine. At worst, he might even give you an antibiotics or something. And then your problem doesn't get solved. And then he says, okay, you need to get some tests done. Then you do those tests. Then he said, no, you need to visit a specialist. Then you go to a specialist. And this whole process, and everywhere you pay money, everywhere you have appointments. The appointment, sometimes you give your time, but you have to wait 2 hours for your turn to come, etc., etc. And he says, when everything fails, after 5-6 months of this exercise, then you start looking for a guru or some healer. And that is the time you come here. And he says, look at the irony. After having tried out everything, when you're coming to a guru, you are waiting for instant, firstly, you have no appointment here. You come at your own will and own time. You have no fees here. You have a free, everything is on the house. Listen to Bhajan. You have pani prasad, chai prasad, langar prasad, blessings, and calm, serene, clean place. Everything at your terms you're getting, and yet you are not. So the point he was making is that you didn't have a problem going through those 6 months paying fees and taking appointments and standing in queues. But here, when everything is there, you sort of don't have patience, and there is a need for you to get into this system of once I remember, I was to go to Guruji's Mandir, and then I had told Guruji, I said, Guruji had told me, you come at so-and-so time. So I said, yes, Guruji, I will be there like a good military man. But all of a sudden, I found that I have got behind time, and there were about 20 red lights I had to pass to reach Guruji's Mandir that time. So, but you know what happened? All 20 were green. As I was driving, all one after the other, all were green. And you won't believe it, that I could cover the entire distance, absolutely without, any delay. 2-3 small other satsang, I will say. I think I have a little time still with me. And when I became an Air Marshal, I had gone to Gwalior on an official visit. It is traditional for senior officers to go and fly with young boys so that, you show, it's a way of leadership to tell them that, okay, you're also as tough as them, and that, you're part of the system. तो मैंने वहाँ जाके एक मिराज 2000 में फ्लाइट किया, 24 फरवरी 2012 की बात है. और जब हम टेक ऑफ किए, एक 2-सीटर था, सीओ मेरे साथ फ्लाई कर रहा था. दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल कि सीनियर ऑफिसर जब आते हैं तो सीओ ही खुद फ्लाई करता है. क्योंकि मैं मिराज 2000 का ही पायलट था. आई वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू पायलट्स ऑफ द एयरफोर्स हु वर ट्रेन्ड इन फ्रांस. In fact, I was in the first formation which brought Mirage 2000 from France to India. So I was doing the flying at around 11,000 feet. अचानक एक बहुत बड़ा बैंग होता है और जहाज के अंदर पीछे आवाज आती है जोर से, और हम देखते हैं कि इंजन फेल हो गया है, इंजन के अंदर फायर लग गई है. और so we immediately put the aircraft into a glide and started preparing for the worst. That is, if you have to get out. We tried to start the engine start नहीं हुआ. Finally हमको eject करना पड़ा. और देखिए जो ejection होती है ना किसी जहाज में, it's a very tough thing because ejection के time body के ऊपर बहुत ज़्यादा forces लगती हैं. तो जब हम वो थोड़े से सेकंड्स थे हमारे, तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आई. एक तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी जो इतने सालों की फ्लाइंग ट्रेनिंग है उसका आज ये टेस्ट है. और दूसरा मेरे दिल में गुरुजी का नाम आया कि मैं गुरुजी आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है और आपने मेरे पे शोल्डर पे अपना हाथ रखना है. ये 2 चीजें बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, बहुत थोड़ा टाइम होता है जब आपको शॉर्ट नोटिस पे इजेक्ट करना होता है. तो ये 2 चीजें मेरे दिमाग में आई. एंड यू वॉन्ट बिलीव इट दैट in spite of being 59 years, 2 months old, after rejection, I'm absolutely hale and hearty. I'm sitting straight and touch wood with the Guruji's blessing. And normally people who have rejected the age of 40 and above,
they often have a lot of medical problems with the spine or with the neck, etc. But Guruji is extremely powerful, extremely kind. आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि गुरु जी की खास फ्रेग्रेंस थी, रोज पेटल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है वो। जब गुरु जी थे तो हम फील करते थे, जब भी वो फ्रेग्रेंस हम गुरु जी के पांव छूते थे, मत्था टेकते थे तो हमको फ्रेग्रेंस आती थी। मगर उसके बाद भी जो भी गुरु जी के साथ जुड़ गए उनको ये फ्रेग्रेंस कई बार, नहीं सारा टाइम आती है, मगर गुरु जी के फ्रेग्रेंस हम अक्सर हर कुछ दिन के बाद, कभी कुछ महीनों के बाद आपको वो फ्रेग्रेंस की एक विफ आती है, which is very unique, which was very unique about Guruji, and all those who have experienced that fragrance can relate themselves with that great fragrance that हम सब जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, we are really blessed. वैसे हम फिजिकली उनके साथ जुड़ गए थे जब वो गुरुजी यहाँ थे, और जब जो गुरुजी के साथ आज भी जुड़ रहे हैं, they are getting equal quantum of blessing from Guruji. If you got Guruji in your thoughts, if you got a swaroop, like you can see the one behind me here, we have a Guruji's picture in every room of the house. When you get up in the morning, the first picture you see is Guruji's. Whether you attend satsang, you listen to satsang, you narrate satsang, whether you listen to bhajans, you have langar, everything is blessings. I personally believe that one-to-one contact has to be established with Guruji. It's you and him, nobody else. Everybody is on the sidelines. They all are making their individual one-to-one, contact with Guruji. The starting point is you. The end point is Guruji, and Guruji is the starting point and you're the end point. That is the way we all have to connect. I am once again very grateful to Subodh Kumar ji and the others who have organized this satsang. I am really blessed for you all to give me a chance to be able to narrate my satsang, because in my narration itself there is a huge amount of blessing Guruji is giving me. Jai Guruji, thank you, Jai Guruji once again.